Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. How are you students? I hope you are all fine. Today again we are here for your online classes. This is your science class. Today the day is Monday and the date is 26th April 2021. This is your 7th lesson of science. Your book name is General Science. This is for class 7. Open the book. You know how to open the book. We always open the book from the content pages. Here are the contents. Lesson 1, Human Organ Systems. We have done this one. Lesson 2, Transport in Humans and Plants. Only one question of this one lesson is left. Other all things we have done. After this we will do the lesson number 4, Environment and Feeding Relationships. Now first we will do the question answer of this one lesson. Lesson number 2, Transport in Human and Plants. And after this we will do the reading of lesson number 4, Environment and Feeding Relationships. Here is the page number 24. We have done in previous class the question number 4, describe the structure of human heart. Today we will do the question number 6, describe that structure of a plant's root permit the movement of materials. Okay, what is the question? Describe the structure of plant's root permit the movement of materials. Now we will find out the answer. The answer is on the page number 21. Structure of roots. From the moment a seed grows, the root starts to search water and minerals in the soil. Roots have branches that play an important role in absorption of water. Next page. This root, the root here on the roots absorb water and minerals from the soil. Roots have xylem tissues to move water and minerals from the soil up through the stems to the leaves. Phloem tissues in the roots help to transport food. I have mentioned all the things in the reading. I have explained this part in the reading. Please will check the reading if you want to more explanation. Okay. Now we are here on the lesson number 4, Environment and Feeding Relationships, page number 34. Now take start for the reading. Living things are all around us. They are in air, on land and in water. What are they telling us? They are telling us that living things are all around us. They can be in the air, on the land and in the water. Environment of an organism consists of all the living and non-living things around that organism. These living and non-living things affect the life of organisms in one way or the other. We have learned in class 6 that organisms live where they can have their needs met. All the organisms depend on each other and non-living things in an environment. We shall discuss it in this chapter. What we have read in this paragraph? We have read in this paragraph that environment of an organism consists of all living and non-living things. यानी एक environment में living और non-living हर तरह की चीज़ें होती हैं जो उस organism के इर्द गिर्द हो सकती हैं. These living and non-living things वो उसके लाइफ पे अफेक्ट करती हैं. ये living and non-living thing उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे अफेक्ट करती हैं. उसके बाद वो हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर रहता है जहाँ पर उसको उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल सकती हैं. अब इसी चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आगे. इसका फर्स्ट पॉइंट है एकोसिस्टम्स. एकोसिस्टम्स क्या होता है? अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of living organisms and non-living organisms in an environment is called an ecosystem. क्या होता है कि इन लिविंग एंड नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनके इंटरेक्शन से जो इन्वायरमेंट बनता है उसे हम एकोसिस्टम कहते हैं. एन एकोसिस्टम मे बी लार्ज लाइक अ डेजर्ट और स्मॉल लाइक अ decaying log. Desert, seashores, rivers, mountains, oceans, grasslands and rainforests are also some of the ecosystems. एकोसिस्टम बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. बड़े जैसे डेजर्ट बहुत बड़े होते हैं और छोटे किस तरह से? जैसे एक लकड़ी का लॉग है जो कि अपनी तब्दीली के टाइम में है, मरहले में है. अब इसमें और क्या क्या आ सकता है? डेजर्ट, सी शोर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, ग्रासलैंड एंड रेन फॉरेस्ट आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ एकोसिस्टम. Part of ecosystems. All ecosystems are made of two parts. How many parts of ecosystems are there? Two parts. The living are biotic parts. Living organism का जो ecosystem है उसे हम biotic part भी कहते हैं. The non-living are abiotic part. Non-living या abiotic part. All the plants, animals, fungi and microorganisms make the living or biotic part of their ecosystem. क्या है जी? तमाम प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं.
ये सारे हमारे बायोटिक पार्ट के हिस्सा हैं या इकोसिस्टम का बायोटिक पार्ट हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जब सेम काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं और वहीं पर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, यानी आबादी। ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। डिफरेंट सारी पॉपुलेशन जो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स की हैं, जब वो किसी एक एरिया में रहती हैं उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग और एबायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब जो एबायोटिक पार्ट है इकोसिस्टम का, या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक उनमें एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर शामिल हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें पिक्चर दी हुई है जिसमें वो बता रहे हैं द नंबर ऑफ वुल्व्स इन द फॉरेस्ट इन देयर इज़ देयर पॉपुलेशन। किसी भी जंगल में जो वुल्फ की पॉपुलेशन है या उनकी जो तादाद है वो उनकी पॉपुलेशन को शो करती है। The wolves and all other animals, plants, microorganisms are included in the community of the फॉरेस्ट ecosystem। अब फॉरेस्ट के ecosystem में वुल्व्स के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, लाइक दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सारे इनकी कम्युनिटी में आ जाते हैं। अभी आपको समझ आई कि जब आप एक वुल्व्स है, उनकी जितनी भी तादाद एक फॉरेस्ट में रहती है, या किसी एक इंसान की तादाद, उनकी एक फैमिली है एक जगह पे रहती है, वो पॉपुलेशन होती है। लेकिन उसी तरह के जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, उसके अलावा और भी कास्ट के लोग रहते हैं, लाइक नॉन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, यू कैन से दैट ईसाई बुद्ध मज़हब वाले लोग हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कम्युनिटी फिर मिलके बनाते हैं, बिकॉज ये डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी तरह से जो वुल्व्स हैं, जब वो एक जगह पे रहते हैं तो उनकी जो तादाद है वो उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन जब वो उसी फॉरेस्ट को दूसरे एनिमल्स के साथ, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो सारी क्या बन जाता है, कम्युनिटी। और मुझे उम्मीद है कि आपको कम्युनिटी और पॉपुलेशन की समझ आ चुकी होगी। नाउ इट्स हैबिटेट। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह वो जगह जहाँ पर जानवर और रहते हैं, जहाँ पर उनके प्लांट्स रहते हैं और अपने साथ मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम उसकी हैबिटेट कहते हैं। अ हैबिटेट प्रोवाइड द थिंग्स एन ऑर्गेनिज्म नीड्स। वो हैबिटेट उसे प्रोवाइड करता है हर वो चीज़ जो उसे चाहिए, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर एक्सेट्रा। मैनी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन ईच हैबिटेट। बहुत सी जो पॉपुलेशंस हैं या जो बहुत सी आबादियाँ हैं वो एक किस्म के हैबिटेट में रहती हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज। Kinds of habitat. Organisms live in different kinds of habitat. An organism has special features to live in its habitat. जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं और उनके अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उस हैबिटेट में रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है द ग्रासलैंड हैबिटेट। Grassland is a grassy, windy, partly dry area. These areas receive a medium amount of rain. The soil found here is very fertile. Grasses are the producers in grassland habitat, mostly grazing animals like the sheep, goats, cows, antelopes, buffaloes, and deers are a few examples that are found in the grassland. A few